Good morning, students. I hope you are done with your homework. And before starting any session, first we will quickly revise our basic rules of accounts. And first rule is a traditional approach. Traditional approach and modern approach. So your accounts is divided in two parts: traditional approach, modern approach. Traditional approach talks about, yes, number one, it's a modern. First one is a personal account where debit the debtor, credit the creditor is relationship. Debtor becomes giver and creditor becomes receiver. So friends, personal account is related to due relationship and receiving giving relationship. That after that, real account. Please speak loudly all these rules of accounts. Real account debit what comes in and credit what goes out, and nominal account debit all expenses and losses, credit all incomes and gains. Friends, after that we have seen modern approach. You remember that I said debit balance, expenses, debit balance. Then you have liability credit balance, income credit balance, and your capital account credit balance. Equation is asset is equal to liability plus capital. Friends, after that better we have seen various journal entries. In various journal entries, there are 10 journal entries we have finished with. So today we are going to see these entries fast. So what are your journal entries better? Yes, quickly revise this, your journal entries. Quickly revise. And today what we are going to cover, sir, today unit number 2 and unit number 3, we are going to see it in today's session, and some part of journal entries we are going to see today. Okay, sir. चलो, so क्या journal entries है सर आज की? हमारे बेसिक एंट्रीज बहुत स्ट्रांग हो चुके हैं सर, वन बाय वन. चलो, SS started business with cash of rupees 1 lakh. Yes, recall this entry. SS started business with cash of rupees to 1 lakh. Everyone, beta, everyone, please. आप लोग जितने भी घर पे बैठे हुए, those who are beta sitting at home, you will recall these entries with Sanket sir speed. Okay, I will give you exactly 5 seconds for every entry. So what will be the entry? Please don't open your books of accounts and try to recall all these concepts. चलो जल्दी से. So cash account and capital account, two accounts are there. Cash is a real account. Yes, बेटा पैसा business में आने वाला है. Cash comes into the business and capital has a credit balance. So capital is a credit the creditor. Quickly revise this. So cash account debit to SS capital account. एक number sir. चलो next entry. Next entry क्या है? Loan taken of rupees 1 lakh. Sir, loan taken of rupees 1 lakh. क्या entry होती है sir? Cash account and bank loan account. Cash account is a real account. Debit what comes in and bank loan is a personal account. Credit the creditor का rule यहाँ पे apply होगा. So cash account debit to bank loan account. Yes. How many entries better you recalled? चलो देखते हैं. Purchase furniture. Sir, what will be the next entry? Purchase furniture. Furniture account debit. So furniture and cash account are there. No purchases account because it is not related to goods. Goods नहीं है तो furniture और cash दो ही account आएंगे. Furniture is a real account debit what comes in and cash what goes out. So furniture account debit to cash account ये आपकी entry होगी. चलो बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया. Goods purchase cash rupees 20,000 and Sangam 15,000. What will be the entry? सब purchase goods है. So goods हो गए तो purchase account will be open. But it is for cash and Sangam is our creditor. Sangam को पैसा देना है, creditor है. So purchase को debit आएगा. सब purchase is our expenses, तो expense को debit आएगा. And cash what goes out. So cash को goes out होगा and Sangam जो है वो our creditor है. So purchase account debit to cash account. Purchase 35,000 because purchases doesn't matter it cash or credit. We will take a total of purchases to cash account and to Sangam account 20,000 and 15,000 respectively. Yes, sir. Direct wages paid. Wages account और cash account दो होंगे. Wages is a nominal account. Wages is a खर्चा. So debit all expenses. So wages को debit होगा, cash goes out होगा. तो wages account debit to cash account. Very good, sir. ये भी याद आ गया. Salary paid to Anand rupees 8,000 and total salary 10,000. Salary खर्चा है तो debit है. Salary expenditure 10,000. 10,000 will be the expenditure and cash goes out होगा to cash account and to salary payable account. So salary payable is a personal account because we have to pay to Anand 2,000 rupees and 2,000 he is covered under the creditors का list. So salary payable is not nothing but it's outstanding salary, accrued salary, provision for salary, all names of accounts of salary only. So salary को debit देना है to cash to salary payable. ये भी समझ में आ गया सर. Very good, very good. Stationery purchase account. Stationery account purchases. Don't open purchase account. Stationery and cash account you will open. Stationery is our nominal account because it's our immaterial. Okay, stationery is immaterial. So stationery account को debit होगा. चलो जल्दी से join हो जाइए and जल्दी आंसर दीजिए. Stationery account and cash account will be there. Stationery is expenses and cash goes out. So stationery account debit to cash account. And then we are going to play a quiz. Quiz तो आज बनती है बॉस. तो आठ स्टूडेंट्स में से बड़ा आप लोगों को फटाफट क्विज को याद करना है. आज मैं दूंगा आपको 5 क्वेश्चंस and let's see who is going to win this quiz. Okay. Stationery account debit to cash account. Very good, beta. Very good. एक नंबर. Next one. Don't miss a single session, sir. Good soul. Cash and Ashish. Cash account होगा और Ashish account होगा. Ashish is our debtor and sales is our income, sir. Income है तो credit है. So cash account debit. Ashish account debit. Ashish is a debtor and to sales account. 18,000 plus 25,000. 43,000 से sales will be booked. So sales income is booked by 43,000.
Okay, 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 sir. Say good morning in the comment section. फटाफट. Investment in FD, sir. Second last entry. Investment in FD. FD है तो बैंक FD is a personal account, sir. FD account open करो या investment account open करो. Investment किया तो real account है. FD किया तो personal account है because it is related to bank. Bank is artificial person. So bank को हम लोग बोले कि artificial person and debit the debtor का rule यहाँ पे apply होगा because we are going to receive that interest once again afterward. Not interest, investment once back. Okay, after 2 years, 3 years, it will get matured. So investment in FD is bank FD account and cash account. Bank FD, yes, it's a debtor and cash goes out hoga from the business. So bank FD account debit to cash account. And last entry, but not least, depreciation on furniture. Depreciation is nothing but it's a reduction in the value of the asset. So depreciation is our loss and furniture goes out hoga. So depreciation account debit to furniture account. Say, beta, how many of you beta recall all these rules of accounts and entries? Fatafat, fatafat boliye. Yes, I know my foundation students are best students and those yes students they are hard working students. वो रोज ये मेहनत करते हैं, रोज 5 to 6 hours ये पढ़ाई करते हैं. They regularly study for 5 to 6 hours and so बेटा you are not going to fail it in the CA exam and ICAI is providing you the best knowledge of all teachers और आप लोगों को ये बहुत बढ़िया मजा आता होगा. Yes, YouTube पे आप लोग अटेंड कर रहे हो but remember you have to answer all these questions. Chalo, let's play quiz. Today's quiz, beta. We are going to see 3, 4, 5 questions and 5 questions के simple answers देने वाले हैं. Good morning, sir. Slowly, no, beta Jishnu. Revision will be fast only. Revision का speed fast होगा. Then I will be slow. Okay. Revisions will be fast. Beta 5 to 10 minutes में quick revision करनी है सभी rules of accounts and all 10 entries. So if you don't match my entry, don't catch my speed, it means you are not doing revision regularly. Okay, जो बच्चा मेरा revision का speed को पकड़ नहीं पा रहा है, तो बेटा आपका मतलब आपने घर पे पढ़ाई नहीं किया. You have to. This is a wake up call और आप लोगों ने ये wake up नहीं किया जल्दी से, तो आप लोगों को बेटा डिफिकल्ट जाएगा. तो याद रखो मेरा स्पीड मैच करना पड़ेगा. मेरा स्पीड आपको मैच करना पड़ेगा. ओके. Yes. I revised them, sir. I recalled it. Very good, sir. Yes. क्विज खेलेंगे आज 5 मिनट के लिए. क्विज में फर्स्ट एंट्री लेट्स सी हु इज विनर. फर्स्ट एंट्री है. सो आवर रीजन्स आई हैव डिवाइडेड क्विज इन 5 पार्ट्स. एनआरओ. सब चलो सबसे पहले मैं जिधर रहता हूं WRO, ERO, NRO, नॉर्थ वाले, सेंट्रल वाले, साउथ वाले एंड देन फॉरेन वाले. ओके, और कोई बच गया क्या? नो. सो वी हैव डिवाइडेड इन 6 पार्ट्स. बेटा फॉरेन के भी बच्चे हैं. FRO. यस. चलिए, सो सबसे पहली एंट्री आ रही है आपकी आंखों के सामने. टेल मी एंट्री ऑफ क्रेडिट सेल्स. क्रेडिट सेल्स. यस, जल्दी से मुझे बताइए क्रेडिट सेल्स. व्हाट इज द फर्स्ट एंट्री? कौन दे रहा है सबसे तेज आंसर? Yes, and nowadays, beta, you are attending this session. Beta, why you are not attending? Because I have my eyes on you, beta. Please, how many of you are not attending other subjects? Yes, you are doing mistakes, beta. Please attend all sessions of board of studies. If you have any problem, you can write it in mail. So सबसे तेज आंसर दिया था विशाल ने. फॉरेन का होता है बेटा. यश अग्रवाल बेटा रॉन्ग आंसर. सेल्स इज अवर इनकम बेटा. हाउ यू कैन से सेल्स इज अ डेटर. विधि पटेल ने सबसे तेज आंसर दिया. विधि पटेल फ्रॉम WRO इज अ विनर और विधि है हमारी पहली विनर. विधि पटेल WRO. सेल्स की एंट्री. दोस्त बेटा हुआ रॉन्ग. माही आनंद बेटा क्रेडिटर नहीं होता है, डेटर होता है. सेल्स हुआ तो पैसा आने वाला है बेटा. प्लीज रेक्टिफाई योर आंसर. Those who have given better wrong answer, please rectify your answer and write down it in the comment section. Sir, I was wrong. Now I will recall it. Okay. So please, जिन्होंने भी गलत किया वो लोग rectify करो. सेल्स इज अवर इनकम है. इनकम है तो क्रेडिट है एंड डेटर्स अकाउंट को डेबिट होगा. सो दोज हु आर रॉन्ग बेटा प्लीज मेक श्योर दैट यू विल पास करेक्ट एंट्री. सो सेल्स क्रेडिट है, डेटर्स डेबिट है. यस, इट्स ओके बेटा. काजल, इट्स ओके इफ यू आर इन द लर्निंग फेज. यू मे मेक मिस्टेक्स और इसीलिए तो मैं बोल रहा हूं ना, आप मुझे फेस कीजिए. यस, तो आपको अच्छे से आंसर्स आने वाले. डोंट वरी, हो जाएगा. इट विल टेक सम टाइम. 5 to 6 days इट विल टेक बेटा. आफ्टर 5, 6 days यू विल रॉक यूर सेशंस बेटा. आपको टाइम नहीं लगेगा डेफिनेटली.
एकदम कम टाइम में आप लोग एंट्रीज याद करोगे. इट्स इन द लर्निंग फेज हो, लर्निंग फेज में हो. आई वॉज रॉन्ग, आई वॉज रॉन्ग, आई वॉज रॉन्ग. इट्स ओके. करेक्ट एंट्री इज डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स. सेल्स बोला तो इनकम है ना बेटा, इनकम है तो क्रेडिट है, इनकम है तो क्रेडिट है. चलो नेक्स्ट वन. नेक्स्ट एंट्री इज बैड डेट्स की एंट्री. बैड डेट्स की एंट्री फटाफट बताओ. व्हाट इज द एंट्री ऑफ बैड डेट्स? हु इज अ विनर? लेट्स सी हु इज अ विनर. बैड डेट्स की एंट्री. बैड डेट्स की एंट्री क्या है? मैंने आपका एक क्लास मिस किया है, अनघा इज सेइंग. सो बात में देखूंगी. इट्स ओके बेटा, बट डोंट मिस माय सिंगल सेशन. एक भी सेशन मिस मत करना बेटा. बैड डेट्स, टेल मी बैड डेट्स एंट्री फटाफट फटाफट. Bad debts to debtor, Anand Sahu from CRO. CRO is a winner. Anand. Yes, beta. Very good. Bad debts account debit to debtors. So second winner is bad debts to debtors. CRO student. First winner थी WRO. So what is the entry? Bad debts. Bad debts अपना loss है and debtors balance is going to reduce. So bad debts debit to debtors. Third entry. Third entry. Third entry. Third entry देखते हैं. Let's play third entry. Discount received. Discount received. Discount received. Tell me. Third entry. आनंद साहू ने दूसरी एंट्री करेक्ट दी थी. नाउ थर्ड वन बेटा SRO. यू आर नॉट आंसरिंग फास्ट. WRO वाले फास्ट है, CRO फास्ट है. SRO NRO वेकअप वेकअप वेकअप. यस. सो दिव्या जी फ्रॉम WRO आज छा गए हैं. दिव्या जी फ्रॉम WRO is a winner. Creditors account debit to discount received. After that, beta Ishan Banerjee, it's a fraction of seconds. You are second one. ERO का बंदा है ईशानी बैनर्जी. ईशानी बैनर्जी बंदी है, sorry. So discount received, creditors account debit to discount. Creditors account debit to discount received is the third entry, and Divya from WRO is a winner. Next entry, salary payable. Salary payable. Next entry, salary payable. Let's see how many of you can answer it. Vinodini, you are wrong, beta. Cash to discount received is not correct entry, beta Vinodini. Creditors to discount received is a correct entry. Yes, बेटा आर्यन, जहां पे आप टाइप कर रहे हो वहीं पे आंसर लिखना है आपको. You have to regularly beta watch our sessions and through BOS app. Please don't miss it to attend all these sessions. These sessions are very important in your life. And what will be the entry for salary payable? So Akhil ji, wrong beta. And NRO का बंदा Aryan Goyal is the winner. Aryan Goyal from NRO. Salary is our kharcha. To salary payable is our liability. Salary payable is our liability and liability shows a credit balance. And last one, salary to salary payable. And last question is, last question. So NRO, till now WRO is a winner. CRO and NRO, beta 1-1 question, you got the correct answer. And now last question, let's see whether WRO is a clear-cut winner or not, or there will be a tie between WRO and other regions, CRO, NRO. Yes. South. Beta South students. And last entry. Last entry. Prepaid expenditure. Prepaid expenditure. Let's see who can answer it. Prepaid expenditure.
So first winner, fastest finger fast. Fastest finger first. Prepaid expenditure last entry. शिवा गुप्ता जी डोंट वरी बेटा, मेरे एंट्री नहीं आ रही है, तो आप प्लीज घर पे अच्छे से रिविजन्स कीजिए एंड यू कैन पार्टिसिपेट इन दिस क्लास. रिविजन्स आर इंपॉर्टेंट. प्रीपेड एक्सपेंसेस लास्ट एंट्री. प्रीपेड एक्सपेंसेस. आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर. That's who is the winner. Winner is. Winner is. Mhm, mhm, mhm. Sayantan Roy. Shayantan. Shayantan is the winner for this year. ERO student. So, no beta. Today, clear cut winner is WRO. Correct entries, prepaid expenses asset. So, prepaid expense account debit to expense account. Prepaid expense account debit to expense account. This is the last entry. It's okay. Those who pass wrong entries, beta, please next time make sure that you will answer correct entries. तो आज की शुरुआत we are going to start with unit number 2, concepts and conventions. Ready? Slightly theoretical session, today's session, but we have to finish with the unit number 2 and unit number 3 before starting next sessions. I hope you are enjoying. I'm new joiner. I have missed previous sessions. So Padma ji, what you have to do? You have to watch my previous sessions. How many of you got the correct answers? All 5 answers correct. Though you are not first, but still you got the all 5 answers correct. Please tell me in the comment section, I got 5 answers correct, or you got 3 answers correct. Write down it in the comment section, बेटा. BOS app में आपके queries मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं. You have to type yes. विधि बहन, चलिए. और if you are consistent, then only you are going to win this race. If you are not consistent, if you are watching this session in recorded one, it's okay. If you have other exams or other classes which are going on, but beta, for CA course, we are best. You do not have to join any other things, beta. If you focus on my sessions in for accountancy, you will never find problems. No, beta Vinodini, don't omit a single chapter. If you know all basics, you can easily answer all these questions. Yes. Those students beta who want to face me, आप लोगों को क्या करना है? If you want to face me, एक ही बात बता देता हूं मैं आपको. So I have no private classes. Yes, remember, but you can join our batches which are going in the PCMC, Pimpri Chinchwad branch of ICAI. It's one of the branch where I take very small fees. It's like 1,000 rupees fees will be charged by the branch, and you can interact with me on Zoom sessions. So you have that option also. तो आप लोगों को यदि वहां पे ज्वाइन करना है तो आप कर सकते हो. ओके, सो मैं आपको डिटेल्स बता दूंगा बाद में. हाँ जी, तो वो आपके लिए फायदेमंद रहेगा जहां पे आप लोग ये एंजॉय भी कर सकते हो और आप फेस टू फेस. आई विल बूस्ट योर कॉन्फिडेंस. आई विल बूस्ट योर कॉन्फिडेंस बिकॉज ये वन वे कम्युनिकेशन है. वहां पे आप 2 वेज कम्युनिकेशन कर सकते हैं. यस, चलिए, इट्स ओके. तो नाउ लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चंस ऑफ yes, what we are going to see today. We are going to see today unit number 2, accounting concepts and conventions. Unit number 3, very important from your real exam point of view also and real life also. So capital and revenue expenditure and receipts, and then some of journal entries. Journal entries we already covered in first part. That 10 journal entries we have finished with. So theoretical framework, unit number 2, accounting concepts, principles, and conventions. You can do one thing, you can take screenshots and you can write it after our session in 100 pages book. I will give you screenshot numbers, or you can rewatch my session and you can take notes out of it. Okay. Now I'm going to explain you what is the concepts, principle, and convention.
4 marks topic. This question topic is for 4 marks. 4 मार्क के लिए वेटेज है. लेक्चर विल बी इन इंग्लिश एंड रिविजन विल बी इन हिंदी. ओके, रिविजन विल बी इन हिंदी. सो डोंट वरी हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स, वी आर विथ यू. यस बेटा विकास, जूम सेशंस हमारे चल ही रहे हैं, तो वो प्रॉब्लम नहीं है. तो आपको उसके लिए सिर्फ क्या करना है, यस, बाद में मैं बताता हूँ लेक्चर के मिडल में क्या करना है. ओके, नाउ लेट्स फोकस ऑन this accounting concepts. 100 pages book. We have one Telegram channel where I put all this 100 pages book की copies, and you can share your notes that I will tell you in the middle of the lecture. Okay, चलिए. So accounting concepts, principles and convention. What it about? Introduction. To avoid confusion, accounting concepts, convention. Now, what is this? What are these terms? Conventions, concepts. What is this chapter all about? To avoid confusion, we must know, and to achieve the uniformity, accounting process is applied within the conceptual framework of generally accepted accounting policies. So, but in simple language, if I tell you about your simple language, suppose you visit your temple, okay, or it might be your holistic premises, beta, where you are visiting regularly, spiritual activity jahan pe hoti. So here, when you visit beta any temple, so first process normally uniformity is there. Suppose Hindus are there, beta, normally our hands are like this. If you are beta Muslim, your hands like this. Okay, so this is a uniformity throughout the your religion. Okay, so accounting is also one type of religion. It's my religion, accounts. Okay, accounts where we must have same policies, same thinking. There should not be any confusion. Whatever you think for accounts, same thinking is of mine. For example, suppose if you are Hindu, so you cannot go like this, and in temple you will do like this. Okay, it's mandatory. You will do like this only. Okay, so remember, there is no confusion. There is no confusion. There is a similarity, uniformity, which you applied in your religion. So accounting is also same process. Accounting also same process, where accounting process having some similar terms, and that terms we have to understand today. That terms we have to understand today. This gap are backbone of accounting information system, without which the whole system cannot be stand. Okay, so we have to understand these policies. These words we have to understand. एक बार हिंदी में बता देता हूं. देखो बेटा, हर एक रिलीजन की अपनी अपनी मर्यादाएं हैं. जहां पे बेटा ऐसे भी रिलीजन है जहां पे आप लोग सिर्फ लड़के जा सकते हैं, लड़कियां नहीं जा सकती वहां पे मंदिर में या मस्जिद में. तो हर एक जगह पे बेटा एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है. क्यों है? सपोज हम जैन लोगों में एक दिन बहुत महत्व का रहता है, जो संवत्सरी, लास्ट डे ऑफ दी जैन, जब हमारे पर्युषण नाम की एक चीज होती है, तो वो 8 दिन जहाँ पे मिच्छामी दुक्कड़म बोला जाता है, तो वो दिन, उस दिन बेटा नॉर्मली हमारे में विधि होती है जिसका प्रतिक्रमण बोला जाता है. तो हम सब लोग ये विधि को फॉलो करते हैं नॉर्मली. तो वहां पे कंफ्यूजन नहीं होगा. सिटिंग कैसे करना है, क्या बोलना है, क्या मंत्र है, ये सब कुछ लिखा हुआ है विधि दिख. तो ये जो है, दिस इज द प्रोसेस दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड. तो अकाउंट भी एक रिलीजन ही है. मैं खुद अकाउंट्स को बोल सकता हूं कि आई एम अ फॉलोअर. लुका दी पैसोली इज अ देवता जिन्होंने रूल्स बनाए. तो ये पॉलिसीज कंफ्यूजन्स नहीं होने चाहिए. तो वहां पे कुछ रूल्स लिखे गए हैं. वो जो रूल्स है उसको हम लोग बोलते हैं जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग पॉलिसीज. व्हाट इट कॉल्ड एज जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग पॉलिसीज. गॉट द कॉन्सेप्ट? जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग पॉलिसीज. और ये हमें सीखनी पड़ेंगी. स्क्रीनशॉट नंबर 1, we'll take it at the end. We'll take it at the end. Okay,
Accountant also adheres to the accounting standards which are issued by Institute of Chartered Accountants of India. Sir, accounting standards. How many accounting standards are there? There are total 29 accounting standards of accounting standards, and Ind AS are separate. Ind AS, but we are going to see it in detail in at intermediate level, not now. What is Ind AS versus accounting standard? But accounting standards, you can simply call it as rules of accounts. So some rules are given by our institute for there should not be any confusion. And to avoid this confusion, institute, our institute beta, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, ये लोगो जिसका है, उन्होंने हमें ये सिखाया है कि इफ देर इज डेविएशन, हाउ यू आर गोइंग टू understand your how to avoid your confusion is given by our dear institute, which is beta Institute of Chartered Accountants of India. 29 accounting standards are given. I think you must know all these accounting standards. Yes, at least names. Over the period beta, you can easily recall it. Over the period you can easily recall it. Okay, over the period beta, no need. Here it is accounting standards. So I will just read names of accounting standards for you. So accounting standards is nothing but it is on page number 1.106. So seventh unit will be also covered. So accounting standards means what? Which is issued by our institute, dear institute. There are, you can see 29 accounting standard, but only 2 standards better removed. And you are going to understand this at CA inter level. You have studied for all these accounting standards in CA inter. Just read these names. I will close my eyes. Okay. चलो कितने स्टैंडर्ड्स है बेटा? कितने स्टैंडर्ड्स है? 29 accounting standard. I will close my eyes. S1 disclosure accounting policy. S2 inventory valuation. S3 cash flow statements. And yes बेटा, I will ये minimize कर देता हूँ ताकि आपको ध्यान में रहे. S4 contingencies and events occurring cash flow statement over. S4 contingencies and events occurring after balance sheet date. S5 net profit or loss for the period private items and changes in accounting policies. S6 is better removed. S7 construction contract. S8 is removed. S9 revenue recognition. S10 property plant and equipment. S11 effects of changes in foreign exchange rate. S12 government grants. S13 is accounting for investment. S14 is accounting for amalgamation. S15 employee benefits. 16 is borrowing cost. 17 is segment reporting. 18 is related party disclosures. 19 is leases. 20 is earning per share. 21 consolidated financial statement. 22 accounting for taxes on income. 23 is investment in associates in consolidated financial statement. 24 discontinuing operation. 25 interim financial reporting. 26 intangible asset. 27 is financial reporting in the interest in the joint venture. 28 is impairment of asset. 29 is provision contingent liability and contingent assets. So, but 29 accounting standards are there. What we have finished now is accounting standard, which is institute. We should by the Institute of Chartered Accountants of India. I'm not going to tell you this list of accounts, and I hope you can recall it within next 1 month. Okay, all these accounting standards, 3 names daily. So it will be very easy because this is our heart of accounts, you can say, because we have to write these accounting standards at inter level. Okay, so it's better daily only 3 accounting standards, and I hope you enjoyed the speed and you can challenge me, you can beat me in next session. Okay beta, at least I'm giving you 1 month, so it's a challenge. Okay, 1 month challenge. Okay, 1 month challenge. Okay, okay, okay. चलिए. So पारस शाह पूछ रहे सर हमारा सिलेबस कब खत्म होगा? भाई अप्रैल में खत्म हो जाए, क्या टेंशन ले रहा है? हम लोग है ना बेटा, अभी चालू नहीं किया और तू बोल रहा है कि खत्म कब करना है. यस, तो आई होप यू एंजॉयड दिस स्पीड. और आप लोगों को कितना मंथ का चैलेंज है? 1 मंथ चैलेंज. डेली 3 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड. यू कैन फिनिश इट विद इन 10 days, बट रिकॉल इट, रिकॉल इट, रिकॉल इट. चलिए. ओके, मेरे स्पीड से कॉम्पीट करना है. वेरी गुड.
Yes, beta, you can. Yes. Your teacher always feels beta very proud if you beat my speed. Yes, beta, definitely. I will feel proud, beta. Don't worry. हो जाएगा, हो जाएगा. चलिए. हाँ जी बेटा, हाँ जी, रोशन दे रहा हूँ बेटा, दे रहा हूँ, दे रहा हूँ, दे रहा हूँ. चैनल का नेम दे रहा हूँ बेटा. आप सभी बच्चों वहां पे 100 के पेजेस के बुक शेयर कर सकते हो अपने अपने हैंड राइटिंग में. यस. मजा आता है आप लोगों के साथ. फाउंडेशन स्टूडेंट्स बेटा, हैट्स ऑफ टू यू. इफ योर बेसिक्स आर क्लियर, आई एंजॉयड इन इंटर एक्चुअली. फाउंडेशन में नहीं, बट इंटर में आई एंजॉयड अ लॉट. जब मैं आपके साथ रहता हूँ, वो इंटर में बहुत मजे आते हैं बेटा. चलो. यस. थैंक यू बेटा लिपि. So list of accounting standards. What is accounting standard, beta? We have a separate session on this. Might be next session where I will take. So accounting standards are which are issued by the Institute of Chartered Accountants of India to have uniformity. To have uniformity. एक जैसा होने के लिए, एक जैसा होने के लिए ये standards होते हैं. So understood first one. So what are accounting principles? Principles means basic norms or assumptions. See, there are some assumptions without which we cannot work. Okay. So these assumptions are developed over a period. And these assumptions, we have to understand it in accounts. So some assumptions. And what are these assumptions? Let's see one by one. So what is accounting principle? Basic norms and assumptions on which your accounting system is developed. Like beta, your ecosystem. जहां पे पेड़ होने चाहिए, एनिमल्स होने चाहिए, सो ये जो चीजें इंसान होने चाहिए, सो दिस इकोसिस्टम हाउ इट डेवलप, वी हैव सेम accounting system which we have to understand. You have to satisfy the following conditions. It is based on the real assumptions. Real assumptions, they are very simple to understand once you got the logic, and it must you follow consistently year after year. Okay. You do not have any other option. Once you accepted this, you have to follow it consistently. Okay. Reflect future predictions. So future predictions from your financial statements, that is balance sheet and profit and loss account, you must predict your future, whether this company is in good position or in bad position. Okay. अभी तो आपको पता ही होगा विवेक बिंद्रा वर्सेस माहेश्वरी जी, तो बहुत मैटर चल रहा है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. सो इंफॉर्मेशन कहां से निकाला जाता है? फ्रॉम योर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. एंड दिस इंफॉर्मेशन आर वेरी यूजफुल फॉर यूजर्स लाइक अस. ओके. वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस इंफॉर्मेशन इज इनफॉर्मली फॉर आवर यूजर्स, यूजफुल फॉर आवर यूजर्स. ठीक है. यस विशाल. स्क्रीनशॉट नंबर 2. चलो. सो today we have to understand these assumptions one by one. Screenshot number 2. You can take screenshots afterward. I will give you time. It is only for my reference. That is screenshot number 2. Now, what are accounting conventions? So principles are basis and norms. What is principles? See, principles are basis, basic norms and assumption. Now, what is convention? Convention are traditions. Basic principles and norms is better called as, it is called as principles, and conventions are tradition. Write it in the comment section. Principles are norms and assumption. Principles are norms and assumption, and conventions are traditions. Conventions are traditions. Okay. It is emerge out of practices. Tradition सालों के साल. Yes. अभी जब भी normally, you know कि Indian marriages are there beta, we normally lady beta wears sari, and see if Christian marriages, so that long dress. Okay. So that is the tradition normally we follow.
व्हाइट कलर का ब्यूटीफुल ड्रेस पहन के क्रिश्चियन लड़कियां जो होती है उनकी शादी में जाते हैं, एंड इंडियन साड़ी साड़ी पहन के एकदम हम लोग नॉर्मली शादी में जाते हैं. सो दिस इज लाइक it's a tradition that we follow. That is a convention. So accounting, maybe there are some traditions that we must follow, and it improves your quality of the accounting information. If you follow that, your information is going to improve your statement quality. Okay. So what is principle? Principle means norms and assumptions. And what is convention? It's a tradition. वेरी गुड. सो लिखो बेटा, आपको लिखना है principles are norms and assumptions and conventions are tradition. If you recall it, then only beta if you write it, then you can recall it. Okay. So in simple language I will call it as traditions. Easy che, easy che, easy che. Yes. Okay. So आज तो हमें यही तो सीखना है. What are the assumptions while preparation of the financial statement that we follow? First 30 minutes, and after that beta very important session, capital expenditure versus revenue expenditure. Very 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 important session. मजा आ गया बेटा आज. हाँ, need not have universal application. See, our traditions are different for different people. So, see, principles universally accepted, conventions not universally accepted. Principles universally accepted, and conventions are traditions. So, traditions are different for different people. Okay, so not universally accepted. What are concepts now, beta? We are not going to write, we are not going to bifurcate it. We have a simpler word in this unit. It may be concept, it may be principle, it may be convention. Actually there is one line difference. So concepts and principles are norms and assumptions, and conventions are traditions. So principles are normally universally accepted, conventions are not universally accepted, but we will use these words interchangeably. देखो मैं एक बार हिंदी में बताता हूँ कि कॉन्सेप्ट्स प्रिंसिपल्स को ये हम लोग क्या बोलते हैं. इट्स ये जो है हमारे एजम्पशंस है, एंड कन्वेंशंस हमारे ट्रेडिशंस है. तो बेटा यूनिवर्सली एक्सेप्टेड कौन है? कॉन्सेप्ट्स एंड प्रिंसिपल्स. कौन यूनिवर्सली एक्सेप्टेड नहीं है? कन्वेंशन. फिर भी हम लोग उसको एक दूसरे के साथ मर्ज करेंगे. ये वर्ड्स जो है ना, ये वर्ड्स को हम लोग इंटरचेंज करके यूज करने वाले हैं. इंटरचेंज करके यूज करने वाले हैं. ओके सर. सो फर्स्ट कॉन्सेप्ट जो आपकी आंखों के सामने आ रही है, एंटिटी कॉन्सेप्ट. सर बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, आई एक्चुअली एक्सप्लेन यू this concept at the time of passing first entry. SS introduced rupees 1 lakh into the business. बिजनेस में ओनर ने 1 लाख रुपया डाल दिया. ओनर ओनर and business are two different persons. Owner is different, संकेत sir is different, and संकेत sir's business is different. संकेत sir के जेब में से cash goes out from the संकेत sir business, but cash comes in the business. संकेत sir के pocket से cash जाएगा, but business में cash आएगा, which is called as entity concept. So business is separate, and businessman is different. Okay. So what is the first line? Business is separate from owner. रट्टा मार. ये लाइन को रट्टा मार. Business is separate identity from its owner. Okay. So whenever this concept is asked in the exam for 4 marks, yes, you have to write this line. Business is separate from his owner. Okay. Rattamar means by heart. South Indian students, Rattamar by heart. Yes. You have to mug up this definition. So, yes, but after that, partnership is also separate, beta. Partnership and partners are different. Company and shareholders are different. Remember, so business entity concepts, their owners are different from their business. यस, वेरी गुड, वेरी गुड. सो एंटिटी मींस क्या? एंटिटी का मतलब बच्चे पूछ रहे हैं हिंदी में. एंटिटी मतलब बेटा एक ऑर्गेनाइजेशन. एंटिटी, अभी संकेत सर की एंटिटी मतलब क्या? सपोज मेरा रिलैक्स होटल है. सो रिलैक्स होटल एंड रिलैक्स का मालिक, ये दोनों अलग अलग है. सो मालिक इज डिफरेंट फ्रॉम होटल. सो ये जो होता है ना बेटा, तो ये जो होता है उसको बोलते हैं एंटिटी कॉन्सेप्ट. इसको बोलते हैं एंटिटी कॉन्सेप्ट.
But we are passing entries in not in the books of SS. We are passing entries in the books of business. Okay, तो हमें बिजनेस के एंगल से सोचना है, ना कि एसएस के एंगल से सोचना है. इसीलिए तो मैं बोलता हूँ ना, एसएस इज अ क्रेडिटर फॉर द बिजनेस. एसएस इज अ क्रेडिटर. एसएस को पैसा देना पड़ेगा ना. मैंने पैसा डाला बिजनेस में, बिजनेस इज डिफरेंट, संकेत सर इज डिफरेंट. तो मैंने पैसा बिजनेस में डाला है, तो मुझे वो पैसा वापस मिलेगा. तो आई एम अ क्रेडिटर फॉर द बिजनेस. ओनर है, पर बिजनेस मुझे वो पैसा वापस देगा. इसीलिए तो इक्विटी एंड लाइबिलिटीज हमें साथ में बताते हैं. कैपिटल भी जहां पे बताते हैं, वहां पे ही लाइबिलिटी बताते हैं, क्योंकि बिजनेस को तो वो पैसा वापस देना है. सिर्फ एक तो ओनर को दो या लाइबिलिटी. लाइबिलिटी फर्स्ट पे करनी है, ओनर को लास्ट में पेमेंट करना है. लाइबिलिटी को फर्स्ट पेमेंट करना है एंड ओनर को लास्ट में. पर पेमेंट तो बनता है ना बॉस, पेमेंट तो बनता है. ओके, ठीक है. नाउ, सो फर्स्ट वन, दिस इज स्क्रीनशॉट नंबर, आई थिंक 3 नंबर. नहीं, दिस इज 3 नंबर एंड दिस इज 4th नंबर. So this concept is very clear. Business entity concept is clear. Okay, you will write this afterward. Money measurement concept. Second concept, money measurement concept. Now, what is first concept? Business entity. Business and businessman must be different. And concept. Concept means universally. Indian people also better doing in the books of business. Foreign people also do in the business books of business. Okay, so they also think from the business angle. Any country. Okay, any country. So that is a concept. Okay, universally applicable. Universally applicable. Yes, Gracia, I can see your comments. Don't worry. हाँ जी. What is money measurement concept? बेटा, we record only those things which can be measured in terms of money. Okay, so tell me frankly, देखते हैं. बार्टर एक्सचेंज, बार्टर वर्ड यूज पता होगा कि बार्टर, बार्टर मतलब क्या? तू मुझे गेहूं दे, मैं तुझे चावल दूंगा. इट्स अ बार्टर. इट्स अ बार्टर जो पहले चलता था. जो पहले चलता था. तू मुझे जूते दे, मैं तुझे गेहूं दूंगा. यस, तो खेती वाला बोलता था मैं तुझे गेहूं देता हूं. चाय वाला बोलता था मैं, सॉरी, दूध वाला बोलता था मैं तुझे दूध देता हूं. सो वेदर बार्टर एक्सचेंज विल बी रिकॉर्डेड, वेदर बार्टर एक्सचेंज विल बी रिकॉर्डेड इन अकाउंट्स. बार्टर एक्सचेंज को हम लोग रिकॉर्ड करेंगे क्या? बार्टर वर्ड को यूज करते हैं. सो बार्टर होता है क्या? रिकॉर्ड होता है बार्टर. यस. यस, टेल मी. प्रीति ने बोला है नो. माही ने बोला है नो. माही शाह नो. प्रीति सिंह नो. शांतन, शांतन इस ईआरओ का बच्चा है लगता है, कोलकाता से दिख रहा है. गौरव पात्रा जी बोल रहे हैं नो. ओनली 4 5 स्टूडेंट आंसर नो. व्हाट अबाउट रेस्ट स्टूडेंट्स? यस, बाकी बच्चों को क्या लगता है, यस और नो? नो 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 नो. बार्टर एक्सचेंज विल नॉट बी रिकॉर्डेड. So correct answer is given by Lisa Rani, Biswal ji. Yes. Yes, Grisha ji. I explain all things in English only. Revision part I take it in Hindi. Please try to understand. Gracia, it's not like only South Indian students are watching my sessions. It's all over India students beta. And some part of India, you have to understand, they are from their regional mediums and it's very difficult for them to understand English, and those students are also here. So beta, sometimes please try to understand. I have to speak in Hindi also. Over the period, Gracia, you can able to understand Hindi also better. Try to understand. Okay. Over the period, your Hindi will get improved. Believe me. I know some South Indian students, and even some students are from Dubai. Now, beta, they are also South Indian students. Kerala students are there. Now they are in inter. Beta, they very well understand Hindi lectures now. Okay, try to understand, beta, please. I'm a teacher, so I have to speak in both languages. It's not only in English. I have to speak only also in Hindi. Yes. So correct answer is okay. Anusa Singh. I am from Kolkata.
ठीक है. सो बेटा, problem is money measurement. Barter, you can measure it in terms of money. See, if I exchange cycle with car, it's very, not realistic example. If I exchange Activa with, I have Activa, my friend has better bike, suppose Pulsar, okay. So he has a Pulsar, I have Activa, and better now I think we should exchange because I want bike and he wants better non-gear vehicle. So we exchange that vehicle, but it has value. Okay, now at what value? We will try to understand it in intermediate. Accounting standard 10 prescribes it. Okay, so remember, barter exchange, you can measure it in terms of money. Money mein hoga. What you cannot measure? What you cannot measure? Emotions. Hmm. Relationship. Okay, if I have employee with me and he's very loyal, okay, I cannot measure his loyalty as an asset because I cannot measure it in terms of money. He's an asset for me. My employee, they are with me in my bad days also and in my good days also. But better, those employees, emotions, I cannot measure in terms of money. So loyalty cannot be recorded in terms of money. Health cannot be recorded in terms of money. And therefore, health, loyalty are not an asset on the balance sheet asset side. So money measurement concept, very simple. Only those in transactions. So remember, barter, yes. Loyalty, example, no. Okay. Got the concept? आपकी सच्चाई, आपकी वफादारी, ये हम लोग नहीं रिकॉर्ड कर सकते हैं. बेवफाई एंड वफादारी ये रिकॉर्ड नहीं कर सकते क्योंकि हम लोग उसको मनी में मेजर नहीं कर सकते. तो रिलेशंस को हम लोग मनी में रिकॉर्ड नहीं करेंगे. Only those transactions which can be measured in terms of money will be recorded. See, barter ये रिकॉर्ड होगा, barter ये रिकॉर्ड होगा. And what is your currency? Is your measuring unit. So your balance sheet P&L will be in rupees in India, US dollars, Japan yens, okay, Germany Deutschmark or euros. So beta, this is how you are going to measure your currencies. Okay, understood? Yes, beta. Patents भी रिकॉर्ड होगा. Yes, बेटा. Patents रिकॉर्ड होगा. So Dhuryani ji, Ramesh bhai is telling me to speak in Hindi. Yes, I will take revision in Hindi. Dhuryani, Ramesh bhai, but at least you have to understand that some words I have to speak it in English only because you have to write it in Hindi, not in Hindi. You have to write it, your paper in English. Ha, conceptual clarity must be in any language, but writing must be in English. So please try to improve your vocabulary day by day. Yes. यस बेटा तन्नू, मुझे तुम्हारे मैसेज दिख रहे हैं. डोंट वरी. बार्टर की वैल्यू क्या आएगी सर? बार्टर की वैल्यू क्या आएगी इसके लिए आपको सीए इंटर में जाना पड़ेगा, वहां पे मैं बताऊंगा. प्लीज इतना याद रखो, बार्टर की वैल्यू है, पर कितने वैल्यू से होगा आज नहीं होगा वो सेशन. सिर्फ उसके लिए आपको इंटर तक पहुंचना पड़ेगा. डोंट वरी. Yes. So second concept we have covered with money measurement concept. What is the important? Measured in terms of money can be recorded. Rattamar point. Rattamar point, which can be measured in terms of money, are only recorded. Transactions which can be measured in terms of money are recorded. Periodicity concept. बेटा मोहन सिंह, ह्यूमन एम्प्लॉयज अभी कोई रिकॉर्ड नहीं कर रहा है. इन्फोसिस ने एक बार रिकॉर्ड करने की कोशिश की थी 1-2 साल, पर उसके बाद उन्होंने भी बंद कर दिया. सो नाउ ह्यूमन वैल्यू इज वेरी डिफिकल्ट टू रिकॉर्ड. सो वी डू नॉट हैव कंट्रोल ओवर देम. सो दैट्स व्हाई वी कैन नॉट रिकॉर्ड. ओके, ठीक है. पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट.
Periodicity concept means, beta, we are starting from 1st April to 31st March. Every, uh, period means financial year, different financial years for different countries. Financial years for countries. If you Google it, for different countries. Mm, so you can Google it, and on Tax Ninja. So you can see fiscal years 1st April to 31st March, Barbuda and Barbados, Belize. So different 1st April to 31st March. Even Kuwait has same. Namibia, New Zealand, beta, all. Bhutan 1st July to 30th June. So there are countries. Australia, South Africa is same April to 31st March. But Australia, Bangladesh, they are using the 1st April to 30th June their financial year. Okay. So every country has its own financial years. Nepal में 16 July to 15 July. Country wise, better you can get December is also there. Israel, Ireland, Iraq, Indonesia. They are using better 1st January to 31st December as the financial year. So financial years are different for different countries, but for India, it is 1st April, 12 months mandatory. 12 months is mandatory, but different for different people. So periodicity concept is there. We have to break our accounting. So going concern concept is applicable for indefinite life. Periodicity concept facilitates. You can compare your financial statement. So see better. Your 1 year, your first standard, second standard, third standard makes a difference. No. So you can compare your marks with previous standard. Okay. So comparing is possible and there is a consistency. Okay. Consistency, uniformity is there and matching periodic revenues and expenses. If you cut it, so you can easily identify expenditure and revenue related to that year. So आपको क्या करना पड़ेगा 1 अप्रैल से 31 मार्च ये आपको फाइनेंशियल ईयर रखना पड़ेगा ओके इंडिया में है फाइनेंशियल ईयर माइट बी डिफरेंट years for different months for different countries okay periodicity concept over so ये भाई concept number मनी मेजरमेंट का रट्टा स्क्रीनशॉट नंबर 5 था स्क्रीनशॉट 5 and periodicity concept beta over beta please I know this chapter is very boring chapter but remember for 4 marks you have to work hard for this chapter and don't take it as chapter just take it as beta enjoy this chapter these words are very new for you entity concept money measurement concept and third one is a periodicity concept okay periodicity concept is easy now accrual beta I'm not going to take this example see example is very simple suppose if I'm paying salary of 12 months. Okay, salary accrued is 12 months, but I paid during the month only 11 months salary. So I will book my salary expenditure for 12 months and not for payment basis. So accrual means incurred or or earned basis, not received or paid basis. Okay. So mercantile बोलते हैं इसको क्या बोलते हैं mercantile. Mercantile means what? Earned, income earned and expenditure incurred. Income earned and expenditure incurred उस basis पे होता है. And what is not important? Received and paid is not important. Income received is not important and expenditure paid is not important. Earned 12 महीने का earn किया. Incurred 12 महीने का खर्चा एक incur किया. So the word is earned for income. लिखो income के लिए word है earned and expenditure incurred. So write it in the comment section. Incurred for expenditure and income earned. Yes, लिखिए. Yes, beta, you can use calculator in exam. एग्जाम में आपको कैलसी यूज करना है एंड प्लीज टेल मी आर यू एंजॉइंग दिस वर्ड्स so first word entity business and businessman are two different persons money measurement concepts transaction which can be measured in terms of money will be recorded third one क्या था बेटा third one याद करो
थर्ड वन याद करो, थर्ड वन याद करो। यस, क्या था थर्ड वन? मैं ही भूल गया। मनी मेजरमेंट के बाद, हाँ, पीरियोडिसिटी। पीरियोडिसिटी में क्या होता है बेटा? पीरियोडिसिटी में दो transactions will be recorded only for the period. Periodicity means you cut down your balance sheet on some date, or you prepare the financial statements for that date. So 1st April to 31st March. And what is accrual concept? Accrual concept means expenses incurred and income earned is important, not expenses paid and income received is important. बहुत ही बढ़िया। माही, एक बार हिंदी में बता देता हूँ। देख बेटा, सैलरी, तेरे पास जो एम्प्लॉय 12 महीने के लिए काम कर रहा है, उसने 12 महीने तेरे पास काम किया, पर तूने अभी तक क्या किया? उसको 11 महीने की सैलरी दी, तो बेटा तेरा खर्चा कितने महीने का होगा? भले तूने 11 महीने की सैलरी दी, फिर भी खर्चा तुझे पूरे 12 महीने का, पीएनएल में जो तुझे दिखाना है वो पूरे 12 महीने का दिखाना है, ना कि तूने जितना पेमेंट किया वो महीने का दिखाना है। ओके, सो तू खर्चा कितना बताएगी? खर्चा पीएनएल में 12 महीने का। अभी खर्चा कैसे दिखाते बेटा, उसके लिए एक सेशन लेंगे। पीएनएल बैलेंस शीट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे बनाए जाते हैं, इसका बेस है, पर इतना याद रखो। यस, ठीक है। हाँ जी बेटा, वेरी गुड निकिता। पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट के बाद हम लोग जा रहे हैं चौथे कॉन्सेप्ट के बाद 5 नंबर के कॉन्सेप्ट पे। 5 नंबर की कॉन्सेप्ट काय रे? ये कौन सा स्क्रीनशॉट था रे? मैं क्यों भूल जाता हूँ? 7 नंबर, 7 नंबर का स्क्रीनशॉट। अभी हम लोग आएंगे 8 नंबर पे, मैचिंग कॉन्सेप्ट। माही ने बोल दिया हाँ सर, आई अंडरस्टूड इट। वेरी गुड माही। मोनिका जी, आई ऑलरेडी एक्सप्लेन दी व्हाट इज द एक्चुअल कॉन्सेप्ट. Okay, though you paid salary of 11 months, but I will book my expenditure of whatever he worked with me. So I will record it for 12 months. So our expenditure is not recorded on the basis of payment. So you will record your P&L account. Suppose 10,000 is a salary. So you will book 1,20,000 and not the 1,10,000 rupees. कैल्सी का पिक्चर, यस बेटा, कैल्सी का पिक्चर होता है तो आपके लिए बेटा मैं बता देता हूँ कौन सा कैल्सी यूज करना है। इसी तरीके का कैल्सी यूज कीजिए, अच्छे स्टैंडर्ड कंपनी का लीजिए, और पैट लीजिए, या कोई भी स्टैंडर्ड कंपनी होगी, सिटीजन लीजिए। कैसियो अवॉइड कीजिए, कैसियो को अवॉइड कीजिए। यस यश, यस बेटा। चलो प्लीज बेटा, डोंट गेट डिस्ट्रैक्टेड यश, ये क्वेश्चन आप बाद में भी पूछ सकते हो। अभी प्लीज 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 आपके पढ़ाई पे फोकस कीजिए। व्हाई एवरीथिंग कम टू योर माइंड रे बेटा? at the time of understanding concept, please have only understanding concepts, okay? Only mind concepts and convention and principle. Why you are thinking about कैल्सी कौन सा है, मेरी शादी होगी क्या नहीं, मेरा बच्चा होगा क्या नहीं, मुझे क्या करना है लाइफ में? अभी क्यों टेंशन ले रहे हो भाई? इतना इतना टेंशन क्यों ले रहे हो? ओके, क्यों ये सोच आती है? वाई यू कैनॉट फोकस ऑन ओनली दैट पॉइंट विच आई एम एक्सप्लेनिंग? मुझे बहुत गुस्सा आता है बेटा ये चीजों का, कि आप लोग इतने डिस्ट्रैक्ट क्यों होते हो। अभी कैल्सी इज अ लास्ट कॉन्सेप्ट ना बेटा, ये क्या करना है हमें? क्यों लिस्ट बॉदर फॉर दिस थिंग्स? एंड में बता दूंगा, एक आध सेशन ऐसे ही आपके साथ रखूंगा बेटा, क्या आपके क्वेरीज होंगे, कुछ होंगे, जूम पे कर लेंगे। अभी फोकस किस पे रहना चाहिए यश? And it is not only applicable to Yash. It is to all those students who are watching my sessions. But these notes, I made it very simple. I'm explaining it in such a way that you can recall each and everything in very easy way. Please refer to study material. You will get the paragraph by paragraph explanation. And I'm covering all your points. Many, teachers, they are even not bothered about all this theory part. I'm telling you the practical point of view. Institute जब कुछ फैकल्टीज को सिलेक्ट करती है, तो बेटा उनकी भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है। दे वांट टू गिव बेस्ट टू यू, एंड आई एम वेरी फीलिंग प्राउड दैट आई रिप्रेजेंट इंस्टीट्यूट फैकल्टी।
आज ऑल ओवर इंडिया में आपके वजह से मुझे पहचान मिली। आई एम नॉट सेइंग कि डायरेक्टली पहचान मिल गई, बट यू आर पीपल। पर आप लोग पास नहीं हुए तो क्या फायदा है मेरा? मैं चाहता हूं मैक्सिमम से, अंडरस्टैंडिंग इज नॉट इंपॉर्टेंट, मुझे आपको पास करना है। माई एम इज दैट। आई एम नॉट अर्निंग फॉर, आई एम नॉट टीचिंग फॉर अर्न मनी। मनी तो आ जाएगा भाई, वो तो आज है और आने ही वाला है। एक साल में करोड़पति नहीं होना है मुझे, पर आप पास होने चाहिए। ये मन में ख्याल क्यों आते हैं, कैलसी क्या है और ये क्या है? चलो, मैचिंग कॉन्सेप्ट। Matching concept means, see, for example, I'm giving you the example so it will be easy for you. Suppose you are my salesman. Assume you are my salesman. Okay? Example, don't worry. You are my salesman, beta, and I am giving you commission. I am giving you the commission, okay, when you are making sales. तो आपने सेल किया. Suppose your sales, you have made it on 20th March. Okay? You sold something on 20th March. And I'm paying commission. I'm paying commission you after 1 month, that is 20th April. My policy, I will pay you commission, but wait, I will pay on specific date. So it is after 1 month. I have given a time for 1 month. So you'll get a commission. So but 1 month will be in the next year. It will be next year. And 20th March, 31st March, before 31st March, so it will be in current year. So now tell me when to record commission. So commission is paid in the next year. Though it is paid in the next year, but expenses will be accrued in the current year. Why? So you are not made payment, no? Are but beta, sales and selling commission are related. They are matching. And if they are matching, we will record in the same period. We will record in the same period. Expenses must match with my revenue. So sales जिस साल में होगा उसी साल में कमीशन होगा, सेल्स कमीशन, दो इट इज पेड इन द नेक्स्ट ईयर। एक बार हिंदी में, एक बार हिंदी में। ओके, सी बेटा, रिमेंबर, आप मेरे सेल्समैन हो। आपको मैंने टारगेट दिया कि बिजनेस मॉडल अपने को रन करना है, आपको इतना इतना सेल करना है। आप बोले सर ओके। आपको मैंने बोला चल पेन ड्राइव भेज भेज दे, मेरे गूगल ड्राइव के लेक्चर भेज। आपको मैंने बोला जो भी गूगल ड्राइव का लेक्चर तू बेचेगा उसके ऊपर 500 रुपए का कमीशन लेके जाएगा। तुम लोग बोले हाँ सर ठीक है, आपका नाम तो है ही, हम लोग कमीशन के ऊपर ये काम भी कर लेंगे, हम लोग बच्चों को बोलेंगे, स्प्रेड करेंगे। अब ये सेल मैंने करने को बोला था आपको, आपने 28 मार्च को एक पेन ड्राइव बेचा। मैं आपको बोला देख भाई, 1 महीने के बाद तुझे कमीशन मिलेगा, क्योंकि देख एक लिस्ट बनेगी कमीशन की। मेरे पास अभी तुरंत पैसा नहीं है, सामने वाले को सेल करने का रोज के रोज नहीं मैं दूंगा, 1 महीने के बाद दूंगा। तो बोलेगा ठीक है, 28 अप्रैल को पेमेंट करना है। अभी 28 अप्रैल आया तो नेक्स्ट ईयर में, 28 अप्रैल कब आया? नेक्स्ट ईयर में आया। कमीशन देना है नेक्स्ट ईयर में। पेमेंट किया आप भी, सेल किया आप भी। सो सेल्स करंट ईयर में किया, कमीशन नेक्स्ट ईयर में देंगे। तो खर्चा नेक्स्ट ईयर में बताना है क्या? नहीं सर, मैचिंग करना है। मैच जहां पे सेल्स किया उसी साल कमीशन बताना है। सो कमीशन की एक्रूड की एंट्री पिछले साल होगी, पेमेंट भले अब भी किया होगा, पर खर्चा लास्ट ईयर में बुक होगा, पेमेंट अब भी बुक होगा। पेमेंट अब भी करोगे और खर्चा लास्ट ईयर में बुक हुआ है। आया समझ में? एकदम इजी छे, एकदम इजी। यस। सो मैचिंग कॉन्सेप्ट ओवर। सो expenses must match with revenue. Going concern concept. Now, what it about? Going concern concept. Please, these examples are very, very important, beta. These examples are very, very important. Going concern concept. Let's understand this. Going concern concept ये बताता है कि business will continue for foreseeable future. Business जो है ना, business जो है वो foreseeable future तक continue होने वाला है।
It will get continue for foreseeable future. Please don't give up for this session. आप लोग बिल्कुल भी ये सेशन को गिव अप मत कीजिए. ये सेशन वंस यू अंडरस्टैंड, बिकॉज इट इज वेरी डिफिकल्ट टू रीड इट फ्रॉम द स्टडी मटेरियल से बहुत बोर होगा पढ़ने को. बिलीव मी, you have to understand these concepts and then you can read study material thoroughly. It will be very easy for you. Once your faculty will explain you, you will find it's very simple. And this rule is not only for my subject, it is for all subjects. After any chapter taught by any faculty, after that beta, you have to read it from study material and make this rule mandatory rule कि जब भी study material को पूरा read करना है. Okay. चलो, तो गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट क्या बताता है बेटा? गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट क्या बताता है? ट्राई टू अंडरस्टैंड. देखो, एक ही मिनट बेटा, एक ही मिनट. हाँ जी, एक ही मिनट. मुझे आपके कमेंट्स नहीं दिख रहे. चलो, सॉरी फॉर आई scold you, some of you, बेटा, बिकॉज ऑफ दिस इमेच्योर बिहेवियर. बट ठीक है, ठीक है. चलो, so going concern concept means business will continue for the foreseeable future. See, what is the example for this? Suppose if I bought one land of rupees 10 lakhs in 2003, but still in 2023, I will record this land at rupees 10 lakhs only. Going concern concept you follow, then you can record your assets and liabilities at cost, not at current price. Sir, today's value is 2 crores. Still, I will record at 10 lakhs. Why? Because I'm not going to sell my business. So going concern concept, if affects, then better you will record your asset at realizable value. You will record it at current value. Realizable means current value. We are going to see the word in unit number 5. What is realizable? Cost means acquisition price. Sir, I will record at 10 lakhs and not at 2 crores. Why? Because I'm not going to sell my business. In the foreseeable future, in the future, मेरा कुछ दूर दूर तक ये नहीं है कि मैं बिजनेस बंद करूंगा. मेरा कोई इरादा नहीं है. तो गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट मीन्स व्हाट? मेरा कोई इरादा नहीं है बिजनेस को बेचने का. तो इसीलिए आई विल रिकॉर्ड ऑल माय एसेट्स एट कॉस्ट एंड नॉट एट रियलाइजेबल वैल्यू. मैं उनको रियलाइजेबल वैल्यू पे रिकॉर्ड नहीं करूंगा. यस सर, गॉट द कॉन्सेप्ट, गॉट द कॉन्सेप्ट, वेरी गुड. ओके. हाँ, मैचिंग कॉन्सेप्ट में एक्रूअल कॉन्सेप्ट ही फॉलो होता है. वेरी गुड निशी गर्ग. मैचिंग और एक्रूअल दोनों साथ में चलते हैं. मुस्कान, एक बार देख लेना बेटा मैचिंग कॉन्सेप्ट. प्लीज एक्सप्लेन करने को मत बोलो वापस से. हाँ जी. एंड रियलाइजेबल मतलब बेचने का वैल्यू. व्हाट इज द वर्ड? कॉस्ट पे हम लोग रिकॉर्ड करेंगे. रियलाइजेबल, रियलाइजेबल मींस बेचने के बाद जो वैल्यू आती है, नॉट एट रियलाइजेबल वैल्यू. So cost is important, not realizable value is important. Going concern concept, what is the meaning? Preparation of financial statement based on the assumption that entity is going concern and will continue its operation in the foreseeable future. Rattamar. Rattamar, this line, continue, this sentence, exam mein aane do. Continue its operation in foreseeable future. Continue its operation. So write down it in your, whenever you are noting down all these points, so you can write on the side ki by heart or rattamar. Okay, rattamar. So you can recall it at the time of exam easily. Okay. So बेटा एक बार हिंदी में देखो. भले मैंने मेरी प्रॉपर्टी 10 लाख में ली थी, एक बार हिंदी में समझ लो. 2000
2003 में मैंने प्रॉपर्टी ली थी, आज तो 2030 है। आज ये प्रॉपर्टी की वैल्यू 2 करोड़ रुपया है। फिर भी मैं मेरे बैलेंस शीट में मैं इसको 10 लाख पे रिकॉर्ड करूंगा। हर साल क्यों चेंज करना है? क्यों नहीं चेंज करना सर? बिकॉज हाँ, कब चेंज करूंगा? यदि मुझे बताना है मेरे शेयर होल्डर को कि मेरे पास इतने की प्रॉपर्टी है, जस्ट शो ऑफ करना है, तो आई कैन रिवैल्यू इट, देयर इज अ प्रोविजन कि आप लोग उसको रिवैल्यू कर सकते हो। पर सर 10 लाख पे बता सकते हैं क्या? हाँ, क्यों बता सकते हो? गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। ये कॉन्सेप्ट बोलता है कि आइदर 10 लाख को बताओ, वो भी दिक्कत नहीं है, आज के वैल्यू पे बताओ तो भी दिक्कत नहीं है। दोनों ट्रीटमेंट अलग अलग है, पर वो कैसे करना है, S10 विल टेक केयर। पर यदि आप उसको बेचना ही चाहते हो, मतलब आपको पता है कि बस अभी बिजनेस से मन उठ गया, अभी नहीं करना है बॉस ये बिजनेस आगे कंटिन्यू, तो आप ये बिजनेस किसी को बेचना चाहते हो, तो आपकी लैंड की वैल्यू 10 लाख पे बताना नहीं है। आपको कौन से वैल्यू पे बतानी है फिर? 2 करोड़ पे। यदि आप बिजनेस कंटिन्यू करोगे तो कॉस्ट पे बताओगे। यदि आप बिजनेस को डिसकंटिन्यू करना चाहते हो तो आप नेट रियलाइजेबल, रियलाइजेबल मतलब रियलाइज मतलब पैसा, पैसा आना। सो रियलाइजेबल वैल्यू मतलब बेचने के बाद जो पैसा मिलेगा, बेचने के बाद जो पैसा मिलेगा उसको बोलते हैं रियलाइजेबल वैल्यू। गॉट द कॉन्सेप्ट? गॉट द कॉन्सेप्ट? यस और नो? रियलाइजेबल वैल्यू इज वेरी इंपॉर्टेंट। दो टू वर्ड्स। कॉस्ट मीन्स कौन से प्राइस पे यू एक्वायर दैट एसेट। कॉस्ट मीन्स एट द प्राइस एट विच यू एक्वायर द एसेट, ओके। एंड रियलाइजेबल वैल्यू, if you are going to sell it, at what price you are going to sell it? Paisa, cash, liquidity. Liquidity words are very important. Cash, liquidity, realizable are connecting words. Easy છે? Easy છે? Screenshot 8. Cost concept. Yes, cost concept. हाँ बेटा, फिर आपको रियलाइजेबल वैल्यू पे ही करना है। अंश वेरी गुड बेटा। कॉस्ट वही अभी जो बताया, एक्विजिशन प्राइस पे रिकॉर्ड करना। गोइंग कंसर्न एंड कॉस्ट आर को रिलेटेड कॉन्सेप्ट, आर रिलेटेड टू ईच अदर। limitations in inflation situation you are not going to record it, and historical cost comparison के लिए not easy, and may asset do not have acquisition cost, for example human asset, but we are not going to record it, okay. So cost concept is next one. So cost concept means if you are not following going concern, then beta net realizable value, otherwise you will follow cost. But cost concept has some limitations, but still in India we record assets at cost. इंडिया में एसेट्स एट कॉस्ट, तो ये रिकॉर्ड होता है, ओके। स्क्रीनशॉट 9 था ये। एक्विजिशन प्राइस एंड रियलाइजेशन मतलब बेचने का प्राइस। यस, ओनली व्हेन बिजनेस रियलाइज इट्स, ओके, यू आर गोइंग टू रिवैल्यू इट, ओके, रिवैल्यूएशन अकाउंट में डालना है। सो ऑलरेडी एक्सप्लेन। ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। एवरी डेबिट हैज क्रेडिट, every debit has credit, I already explained it. Every debit has credit, okay, every debit has credit. Conservatism, उसके बाद यस बेटा, कंसिस्टेंसी एंड मटेरियलिटी, आई एम गोइंग टू रिकॉर्ड इट इन नेक्स्ट सेशन। नेक्स्ट सेशन मीन्स नॉट आफ्टर ब्रेक, इन नेक्स्ट सेशन, बिकॉज आई डोंट वांट टू मेक इट very very theoretical. So we'll do this lecture, but in next session, because it's a biggest chapter of your chapter number 1. So I will break it, because next session I will, I know that after 1 hour better you are getting bored. So I will make it very interesting by taking your chapter number, unit number 3 and unit number 2, remaining part. We will do it in next session. So better screenshots, don't take it now. We will write these screenshots in next session, okay. All this we'll do it in the next session, ठीक है। चलिए, सो एक छोटा सा ब्रेक ले लीजिए विनू जी, और हम लोग जल्दी ही कम बैक करेंगे आफ्टर 10 minutes। 12:25, डोंट मिस इट।
Welcome back once again, beta. See, now we have finished with half part. Now we have finished with half part of chapter number 2. And now we are going to see a very, very, very important chapter. That is chapter of capital expenditure versus revenue expenditure. I know this chapter is slightly in practical life difficult, but in theoretical life it will be easy and you have 4 marks question. एक बार मैं हिंदी में बता देता हूँ. ये चैप्टर बहुत ही सिंपल चैप्टर है पर रियल लाइफ में इट्स वेरी डिफिकल्ट. इसके ऊपर से बहुत सारे झगड़े होते हैं. इनकम टैक्स ऑफिसर बोलता है कि इसको कैपिटल एक्सपेंडिचर रखो और हम लोग बोलते हैं कि नहीं सर इसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रखो. अभी ये वर्ड्स क्या है, कैपेक्स वर्सेस रेवेक्स, वो हमें सीखना है इन द चैप्टर विच इज कॉल्ड एज यूनिट नंबर 3, कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड रिसीट्स. Most important chapter in your practical point of view. Okay. So, beta, don't write anything for unit number 2 today. We'll take screenshots in the next session for unit number 2. And today you can finish unit number 3 in your 100 pages book. तो आपको क्या करना है? In your 100 pages book, आपको unit number कौन सा करना है complete? एक मिनट. Unit number 3 को complete करना है. And now, for everyone, direct entry students, or might be some students better who are watching this session only for understanding purpose. So for them, this session is very important because this is real life capital versus revenue expenditure, real life beta problems of capital expenditure and revenue expenditure. So let's start. Very interesting chapter, unit number 3, overview. Overview. Introduction part. So next 30 minutes are very important one. Introduction part. Why to analyze expenditure of capital or revenue? Very simple. Capital expenditure we record on the asset side and revenue we will record on the expense side. P&L. In P&L. So revenue expenditure. So mark my words. Revenue expenditure in profit and loss account and capital expenditure in asset side. चलो जल्दी से लिखो. Write it in the comment section. Write it in the comment section. लिखिए. Okay, beta. Some students are asking me about channel where you can get this 100 pages book notes of different students. Foundation June 24 with SS. Foundation space June space 24 space with SS. Space देके करना. So those students who want to join, we will share their different students के notes because it's not possible to share all notes what is written over here. What you have to write it in 100 pages book. We have a separate notes where you can channel where you can write this from different students so I can interact with you. चलो ठीक है. So beta, one important point. Why to analyze revenue expenditure and capital expenditure? Write down. Write down.
Yes. What is important over here? Huh. Here, for ascertaining the periodical business results, for ascertaining the periodical business results, the nature of transactions are to be analyzed either in profit or loss account. I already told you profit or loss account, or balance sheet for capital transaction. So if it is capex, I will call it as capex or revex. Revex in P&L and capex is in, yes, capex we will write it in balance sheet asset side. चलो, okay, ठीक है. So okay, now I will focus on my टीचिंग नाउ प्लीज. तो मैंने सब बातें आपसे बात कर ली है, सब मैंने बता दिया आपको क्या है क्या नहीं है. और 100 पेजेस के बुक के स्क्रीनशॉट्स आपको लेने पड़ेंगे बेटा. स्क्रीनशॉट 1 था ये. और टुमारो आई विल गिव यू स्क्रीनशॉट, डे आफ्टर टुमारो आई विल गिव यू स्क्रीनशॉट्स ऑफ चैप्टर यूनिट 2. यस, ठीक है. यूनिट 2 you can do afterwards बेटा. Today please don't write unit 2 notes. Today write unit 3 notes and then you finish it with unit number 2 day after tomorrow. Okay, so don't write anything for unit 3. Yes लिपि बेटा, ठीक है. विल मीट समडे. कोलकाता में मैं हूँ, मैं बता दूंगा. चलिए, कैपिटल वर्सेस रेवेन्यू रिसीट्स. सो कैपिटल रिसीट्स मींस यू विल शो इट ऑन द लाइबिलिटी साइड and revenue receipts on the P&L credit side. So screenshot number 2. So revenue receipt means what? Day to day income. P&L credit, day to day income. Day to day income. You will record, for example, my professional fees. What I earn from my clients, I will record it in the P&L account. Sale of goods, P&L credit. Receipt of interest, regular income. Dividend income, regular income is better. Receipt from normal business, it's called as a revenue receipt. Screenshot number 2. You can take screenshots afterwards, better, not now. I will give time for taking screenshots. Capital receipt कहाँ पे बताना है? Capital receipt you will show it on the liability side, where you will show it is not revenue in nature. Okay, so it is carried to balance sheet. Capital receipt is shown in the balance sheet. Okay, which is not revenue in nature. Normally liability side पे बताया जाएगा, और asset में से reduce, और asset में से minus. Either liability side or deducted from the asset. Screenshot number 3. 3 only, no beta? Yes. Capital expenditure beta. Revenue expenditure P&L debit. Monthly salary, rent will record in the P&L side and debited to P&L. 4 screenshot beta. Screenshot 4 debited in P&L. So I will give time to take screenshots. This is just for your reference purpose. Which number? Screenshot 4. So it will be recorded in the P&L account debit side. That is regular expenditure. So for example, rent I'm paying every month, or advertisement expenses, or salary, or might be wages that I'm paying every month is called as revenue expenditure. And suppose if I'm buying something for my personal, not personal, for business purpose, in that case, beta, for example, if I bought one vehicle and it will be with me for more than 12 months. So 12 महीने के ऊपर जो मेरे पास asset रहेगा, it will be called as capital expenditure. So it's very easy. If it is more than 1 year, that benefit you will get from it for more than 1 year, it is called as capital expenditure. उसको हम लोग क्या बोलेंगे बेटा? Capital expenditure. Okay. So very simple. Screenshot number 5 we are going to take. Screenshot number 5. Balance sheet. Key differences. Capital expenditure are for long-term period, but obviously it is for long-term period. It is not for short-term period. Capital expenditure you will incur for more than 1 year. Okay. For more than 1 year. And revenue expenditure
revenue expenditure, you will record it for short term period or current period. It is for less than 12 months. Second difference, enhancing capacity. For example, due to capital expenditure. So these are the different, uh, criteria. It's not like that key capital expenditure is always for more than 12 months. No, there are some expenditure for which you may take benefit more than 12 months, but it will be still recorded as a revenue expenditure because it does not enhance your capacity. I will give you some example. Okay. So not maintaining capacity. Okay. Purchase of machinery, repairs and maintenance. Screenshot 6. Screenshot 6. Considerations. Now this is very important. IMP part. What you have to consider whether it is revenue expenditure or capital expenditure. Number one, nature of business. Suppose if you are a furniture dealer, and you are buying as furniture and selling furniture, better in that case, furniture is revenue in nature. But suppose if I am a teacher and I bought some furniture, I bought some benches, so for me it will be capital expenditure. So nature of business is important. Furniture dealer, purchase of furniture is revenue in nature, but for other dealers, furniture will be asset. तो कैपिटल एक्सपेंडिचर कहां पे रिकॉर्ड होगा? एसेट में. और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहां पे रिकॉर्ड होगा? P&L डेबिट में. Recurring in nature. Revenue expenditure are recurring. Normally, every month you are paying it. Normally, it is non-recurring. Recurring versus non-recurring. Okay. Recurring versus non-recurring. Purpose of this expense. Purpose of this expense. Normal course of maintenance and for major repairs. Increases the productive capacity. So if capacity is increasing, but we are going to see some examples, so don't worry. Major repairs will be considered as capital expenditure. Revenue generating capacity. It generates revenue only for the current year. You will get benefit only for the current period. You will get benefit for more than 1 year. Seven and 8. Screenshot 7 and 8. And screenshot 9. Materiality, small amount, immaterial, lower material, or material means, these expenditure are, you incurred a big expenditure, that is material, important. Materiality means important, important. So screenshot number 9. Yes, we have done with theory part. So what you understood, you can write it. I just want to see how many of you can write this. Yes, beta. What is the capital expenditure versus revenue expenditure? Can you define this? Yes, beta. Can you write it in the simple way? What is the difference? It's very important in real life of real point of view. In your real life, beta, revenue versus capital is very important because you have to bifurcate this. सिंपल भाषा में मैं बताना चाहता हूँ बेटा, हिंदी में एक बार बता देता हूँ. रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो होते हैं वो 12 महीने के नीचे हम लोगों को हर महीने वो खर्चा आता है. कैपिटल एक्सपेंडिचर सालों में, सदियों में एक बार आता है. मतलब महीनों में 12 महीने, 1 साल, 2 साल, 3 साल में एक खर्चा आएगा. पर जरूरी नहीं है कि सिर्फ खर्चा 2-3 साल में किया तो इसका मतलब वो कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया. ऐसा जरूरी नहीं है. दीज आर सम कंसिडरेशंस. ये कुछ पॉइंट्स है. ओके, जिसको आप नजर में रखते हुए ये बाइफरकेट कर सकते हो, पर सिचुएशन टू सिचुएशन ये डिफर होता है, ये ध्यान में रखना. चलो बच्चा, कुछ एग्जांपल्स देखते हैं. यस, ओवरऑल एक्सपेंसेस. ओवरऑल मतलब रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस. रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस इनकर्ड ऑन सेकंड हैंड मशीनरी. सेकंड हैंड मशीनरी पे जो खर्चा है, प्लीज डोंट रेफर आंसर. Overall expenses on second-hand machinery, repairs expenses on second-hand machinery. Can you tell me it is revenue expenditure or capital expenditure? Yes. देखते हैं आप में से लोग.
कोई बताएगा मुझे? ओके, सी, हाउ टू राइट द आंसर is important. Overall expenses means, yes, yes, I'm giving you time. Overall expenses. In simple language, it is repairs. It is repairs. Okay. Overall means repair expenditure. You bought some second hand machinery. आपने कोई second hand स्कूटर खरीदी या व्हीकल खरीदी और उसको आपने मरम्मत की। मरम्मत वर्ड तो आपको पता ही होगा। सो रिपेयर किया उसको, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? ओवरऑल एक्सपेंसेस। ओवरऑल एक्सपेंसेस। ओके। overhaul overhaul overhaul. Okay, overall expenses you incur it. So this expenditure is called as beta overall expenditure. Second hand remember, summary बना सकते हो आप लोग। second hand machinery is beta what you have to write it in exam. These words are very important to make it in working condition. So box it. Working condition you can write it by red pen. To endurable long-term advantage. So long-term advantage, these two words are important. So it should be capitalized. Okay. And I will make a summary of this. You can write summary after that in your 100 pages. In 100 pages book, write only summary. And in 400 pages book, write the reason. Summary. Number one, I will write capex versus revex. Summary में capital expenditure में क्या आएगा? Overall expenses on second hand machinery. Overall expenses on, you can take a screenshot afterward, second hand machinery. This is your screenshot number 10 in your 100 pages book. Okay. So these words are very important. 400 pages book may highlight it. Working condition and long-term advantage. So these words you have to write it in exam. So if you write just capex, no one will give you marks. You have to write reason behind it. और writing reason is one of the important part. Okay. So reason को लिखो तो marks मिलेगा. Important क्या है? Reasons को लिखना. Okay. So 400 pages book में write down with reason, and in 100 pages book only summary. ओके बेटा, अंडरस्टूड बेटा? मैं बहुत सिंप्लीफाई करके दे रहा हूं आपको। आई एम गिविंग यू लास्ट डे रिवीजन नोट्स। ठीक है। सो टू वर्ड्स आर इंपॉर्टेंट इन योर 400 पेजेस बुक, वर्किंग कंडीशन एंड लॉन्ग टर्म एडवांटेज। चलो, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। मनी स्पेंट टू रिड्यूस वर्किंग एक्सपेंसेस। मनी स्पेंट टू रिड्यूस वर्किंग एक्सपेंसेस। Yes, tell me. Money spent to reduce working expenses. Now, what is working expenses? Working means day-to-day expense. See, if you have, you know, uh, chalo, very easy example. Yes, if you have made for, you know, for your washing of dish and सपोज फॉर क्लॉथ्स। ओके। सो मेड क्या करती है? आपकी आपकी काम वाली बाई है जो आपके कपड़े धोती है और वॉश, बेसिक ये डिश वॉश करती है। सो फॉर दैट बेटा यू रिप्लेस्ड हर बाय बाइंग वन वॉशिंग मशीन। सो यूर डेली एक्सपेंसेस, सो मेड को जो देने के एक्सपेंसेस है, यू सेव्ड इट। ओके, मनी स्पेंड टू रिड्यूस वर्किंग एक्सपेंसेस। तो बेटा मुझे एक बात बताओ, वॉशिंग मशीन लेना ये कौन सा खर्चा हुआ? कैपिटल एक्सपेंडिचर। व्हाट इज कॉल्ड एज कैपिटल एक्सपेंडिचर। यस, लॉन्ग टर्म बेनिफिट होगा, इट बिकम पार्ट ऑफ intangible fixed asset in case of technical know-how, and tangible fixed asset for replacement, so it's a capital expenditure. So आपको दो वर्ड्स आने चाहिए, लॉन्ग टर्म बेनिफिट, intangible होगा तो know how. Now what is know how? Beta, I will explain it in the next session when we start with the depreciation chapter.
intangible asset and know-how, and tangible means which you can see for that replacement. So for that replacement, therefore capital expenditure. So summary में क्या लिखेंगे? So these keywords बेटा I boxed it. Keywords को मैंने box करके दिया है. So you can highlight it by red pen. You can write it by red pen. These reasons in 400 pages book. So ये आपको 100 में भी नहीं, ये 400 pages book में लिखना है. 400 pages. I will note down it. 400 pages, and you can take screenshot at the end. So 400 pages में आपको लिखना है. So money spent to reduce working expense कहाँ पे लिखूंगा? Money spent to summary में spent to reduce working expense. Working expense. Yes. Summary. Money spent to reduce working expense. Next one. Amount spent as lawyer's fees. Amount spent as lawyer's fees. Technical know-how means, in the simple language, you only know what is the process of manufacturing that. Okay. So आपके पास ही उसके राइट्स है. टेक्नोलॉजी के राइट्स जिसको बोलते हैं उसको बोलते हैं नो हाउ. टेक्नोलॉजी राइट्स. फॉर एग्जांपल पल्सर हैज डीटीएसआई इंजन. सो डीटीएसआई इंजन सिर्फ पल्सर का राइट है. ओके. इट इज टेक्निकल नो हाउ. नो हाउ. You only know how to produce it. Yes. So amount spent on lawyers' fees to defend the suit against firm's factory side. फैक्ट्री साइड के अगेंस्ट एक केस चालू है और वो लॉयर की फी किया. I may win the case or I may lose the case. So this is like maintenance of an asset. और maintenance है. So we don't know exactly whether we are going to win or we are going to lose. So amount spent as a lawyer fee to defend a suit against the firm's factory side is maintenance expenditure of an asset. So treated as revenue expenditure. It is called as maintenance expenditure. Okay. So amount spent, see, lawyer fees for to defend a suit against factory side. A suit against फैक्ट्री साइड. सी द डिफरेंस. हाँ, कंपनी के अगेंस्ट की लॉयर फी है. कंपनी के अगेंस्ट की. नाउ अंडरस्टैंड, इफ लॉयर फी इज पेड फॉर बाइंग एसेट, बाइंग एनी प्रॉपर्टी, then it will be capital expenditure. You know, we have to pay to lawyer for search report. सर्च रिपोर्ट होता है. या बैंक आपसे लॉयर की फीस लेती है कि वो प्रॉपर स्क्रूटिनी करे. तो उसकी जो फीस है, लॉयर की फीस एट द टाइम ऑफ टेकिंग लोन और बाइंग एसेट, that fees you have to add it. So see the purpose. If it is buying property, then it is a capital expenditure, and against factory side, then it is a revenue expenditure. So see the difference. Buying property or defend a suit. If defend suit, then revenue expenditure. For buying property, capital expenditure. Got the difference? Yes. Expenses incurred on repairs and washing for the first time on old building, better second hand. So it is similar to first time repairs on second hand. So already done, better. It is building usable condition के लिए. So this is a capital expenditure. We already wrote here. Overall expenses or first time on any machine you incurred any repair expenditure on the second hand assets. Second hand asset के ऊपर, old building के ऊपर, परचेस ऑफ ओल्ड बिल्डिंग. तो यस, सेकंड हैंड कुछ भी लेना होगा तो उसके लिए जो भी खर्चा करोगे फर्स्ट टाइम, इट विल बी बेटा. यस. अमाउंट स्पेंट ऑन कंस्ट्रक्शन ऑफ टेम्पररी हट्स. अमाउंट स्पेंट ऑन, ओके, अमाउंट स्पेंट ऑन
सी बेटा, अमाउंट स्पेंड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑन टेम्पररी हट्स, क्या लगता है आपको? यस, दिस इज कॉल्ड एज कैपिटल एक्सपेंडिचर. दिस इज कॉल्ड एज, यस, राइट डाउन, टेम्पररी हट्स फॉर कंस्ट्रक्टिंग सिनेमा हाउस. सी द ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव क्या है आपका? सिनेमा हॉल बनाना है. और उसके लिए आपने क्या किया? टेम्पररी हट्स को, अपने वहां पे जो लोग रह रहे, लेबर लोग, तो लेबर लोग बेटा, दे आर लिविंग इन दैट टेम्पररी हट्स. सो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट रिलेटेड खर्चा है. सो इट विल बी कैपिटलाइज. ओके, सो पार्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन कॉस्ट, what is the important? It is a part of construction cost. और सिनेमा हॉल, paid for removal of inventory to a new site, paid for removal of inventory to a new site. See, inventory is day-to-day activity, beta. To you are shifting to new site, so it is not construction of any asset. So it will be treated as revenue expenditure because no endurable benefit in the future and no capacity. So no endurable benefit and no capacity. So इन्वेंटरी को एक जगह से दूसरी जगह पे हटाया, पेड फॉर रिमूवल ऑफ इन्वेंटरी. इन्वेंटरी मतलब स्टॉक, इन्वेंटरी मीन स्टॉक विथ यू, पेड फॉर removal of inventory. But this summary is very important. Next, rings and pistons of an engine were changed on overall expenses to get the fuel efficiency. So beta, you change main part of the engine, rings and pistons. So beta, your capacity is increasing. It's a capital expenditure because improvement in the asset, and this is profit earning capacity भी बढ़ जाएगी. Yes. And cost reduction, ये words आने दो. Yes, these two words are very important. Rings and pistons. Rings and pistons changed. Changed. Of engine ना बेटा. हाँ. Money paid to Mahanagar Telephone Nigam. Money paid to Mahanagar Telephone Nigam. बेटा गूगली क्वेश्चन है, IMP क्वेश्चन. IMP question. You are going wrong. Capital expenditure. No. No. It is not expenses. Not an expenses. It is deposit. This is called as deposit. Called as deposit, not an expense. Okay. So आपने महानगर टेलीफोन निगम को पैसा दिया. So this is a googly question. Googly question. So you can write it in margin ऊपर. Money 100 pages book में, money paid to MTNL for installation of telephone. So this is not capital expenditure. This is deposit. This is not expenditure. You may get refund. Okay. You may get refund. तो ये deposit, ये बेटा गूगली क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. Expenditure incurred in obtaining a license for cinema hall 20,000. During the course, cinema hall fine beta, fine is revenue expenditure. And renewal is also for next year. So there are three expenditures. So license for cinema hall, yes beta, summary में, license for cinema hall, capital expenditure. Fine,
And renewal fees. Renewal means every year you have to renew your license. Renewal fees is revenue expenditure. So beta answer is license is capital expenditure. 1000 is revenue expenditure. And next year ka renewal is prepaid expenditure. Prepaid expenses. See, this is very important. Huh? Inauguration expenses. Now this is very important. Inauguration expenses for opening manufacturing unit, but it is revenue expenditure because you don't know exactly whether you will get benefit, because it might happen that you won't get benefit. So inauguration expenses. See, suppose if I appointed Salman Khan, so मैंने मेरा क्लास खोला और मैंने बोला सलमान खान please come to my classes, I will pay you 100 crores rupees. Okay, so inauguration expenses. So that inauguration expenses, beta, remember, inauguration expenses will not give you any exact benefit. So it is not with you. This is expenditure. You don't see that asset. Okay, so it's not intangible also. Okay, it is not intangible asset. So inauguration expenses is always, beta, considered as very, very important. It is revenue expenditure. Compensation paid to workers opted voluntarily retirement. So, beta, it is also called as voluntary retirement expenses. Though amount is big, voluntary retirement expense is a revenue expenditure. It's a revenue expenditure, voluntary retirement expenses. Insurance claim received. Sir, it is a capital receipt. Received. Received है तो capital receipt है. Insurance claim received against machinery. Machinery, if it is against goods, then better revenue receipt. Machinery के against होगा, तो machinery is asset, so it is capital receipt. If it is for goods, then revenue receipt. For goods, receipt, yeah, receipt. Revenue receipt, not expenditure. And legal expenses incurred to recover installment pending from customer. It is a revenue expenditure. Remember. Recover installment. आपने किसी के against case कर दिया. Okay. To recover installments. So legal expenses to recover installment is revenue expenditure. But all these important receipts and expenditure, I hope you understood it. So you can take a screenshot. और अभी last के 5 minute बेटा brain gym, whatever we finished till now. Yes, beta, you can tell me brain gym. On repair cost 25,000, whitewash expense 5,000. Both these expenses are presented building. Cost of extension of building is 2,50,000 and improvement of electrical wiring system 19,000. तो expenditure में कितना जाएगा? Repair cost expenditure, whitewash भी expenditure. So revenue expenditure. Revex, capex and improvement of the ये भी आपका जाएगा कैपिटल एक्सपेंडिचर. इलेक्ट्रिकल वायरिंग में आप लोगों ने पैसा खर्चा किया तो 30,000 is your expenditure. What is the answer? 30,000. You can write 25,000, 5,000. Revex. Extension beta capital expenditure and electrical wiring is also capital expenditure. Sale of product is revenue receipt. Sale is made, cash is collected, and products are manufactured. Sale is made. So sale of goods act beta, law teacher will tell you when to record sale. Amount received from IDBI as a loan. Received है तो कैपिटल रिसीट होगा. लोन है ना, लोन है तो कैपिटल रिसीट. लोन है तो कैपिटल रिसीट. इट्स अ कैपिटल रिसीट. लोन मतलब कैपिटल रिसीट हुआ, पैसा आया. इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट रिसीव्ड इट्स अ डे टू डे इनकम. रेवेन्यू रिसीट. रेवेन्यू रिसीट. Okay, revenue receipt. Easy. Insurance claim received on account of machinery. See, machinery. Machinery is capital expenditure. So insurance claim is received is capital receipt. So capital receipt, we already covered. Subsidy 40,000 received from government. Why? Working capital. Working capital matlab day to day. Day to day means revenue receipt. Okay, day to day means revenue receipt. So correct answer is revenue receipt. Working means day to day and day to day means revenue. So it's a receipt.
Entrance fees 2000 received by Ram and Sham Social Club. Now बेटा this can be revenue receipt or capital receipt, पर इंस्टीट्यूट ने इसको क्या ट्रीट किया होगा, तो रेवेन्यू रिसीट, बिकॉज अमाउंट इज स्मॉल, तो रेवेन्यू रिसीट. Lawyer fees defend a suit already better written in revenue expenditure. Revenue expenditure. Money spent on 10,000 traveling expenses. Why traveling expenses? On purchase of capital asset. बेटा एसेट लाने के लिए ट्रैवलिंग एक्सपेंस इनकर किए, नॉट रेगुलर एक्सपेंसेस. सो बेटा इट विल बी कैपिटल एक्सपेंडिचर. इट विल बी कैपिटल एक्सपेंडिचर. ओके, वेरी गुड. So see the purpose why you are incurring that cost. It is for purchasing capital asset. You visit abroad. So capital expenditure. Thank you. Take care. Bye bye. This is all for today's session. I hope you enjoyed. मजा आया आपके साथ. अभी आपको स्क्रीनशॉट्स लेने हैं फटाफट फटाफट. Yes, take a screenshots. यहाँ पे मेरा यूनिट नंबर 3 खत्म होता है, एंड यू कैन रीड नाउ फ्रॉम योर स्टडी मैट all unit 3, all examples, and now you can solve these examples by very easy way. So screenshot में यहाँ से हट रहा हूँ. अभी आपका स्क्रीनशॉट का टाइम है. चलो जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट ले लीजिए. जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट ले लीजिए. नंबर 1, स्क्रीनशॉट 1, स्क्रीनशॉट 1. यस. सेकंड 1. यस बेटा, स्क्रीनशॉट 1 ले लिया. स्क्रीनशॉट 2. ले लिया. प्लीज शेयर इट ऑन our Telegram channel. Someone, all screenshots together. Screenshot 3. Screenshot 3. Yes, beta. Screenshot 4. Screenshot 5. Screenshot 6. Screenshot 7. Screenshot 8. Screenshot 9. पर आज का लेक्चर ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करो, और ज्यादा से ज्यादा बेटा लाइक करो. ऑल ऑफ यू, कंपलसरी. जितना शेयर करोगे बेटा उतना अच्छा होगा. सो तनु जी, मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है आपका आंसर. आप पीछे जाके चेक कर सकते हो. The examples you have to write it in 400 pages book. Wait. I will give you screenshot for this. हाँ जी, ये आपको स्क्रीनशॉट लेना है. पहले तो ये आपको मार्जिन में लिखना है. ये आपको एकदम ऊपर मार्जिन में लिखना है इन योर 100 पेजेस बुक. स्क्रीनशॉट 10 है ये आपका, जो मार्जिन में लिखना है. मनी स्पेंट. You have to write this. Screenshot 11.
Screenshot. 12. Screenshot 12. Examples लिखो बेटा. So now is 400 pages book. 1. 400 pages 1. 400 pages 2. 400 pages P2. 400 pages 3. 400 pages 4. 400 pages 4. 400 pages 5. 400 pages 6. 400 pages 7. बेटा टुडेज होमवर्क ज्यादा है आपका. फिनिश इट ऑफ. 400 pages 8 because you have to do self study also. Yes, 8. This is your self study, so you can recall these sessions while writing it. And last but not least is a brain gym. Nahin, nahin, bas. So brain gym you can finish it from your study material. If you think this is IMP question, तो mark it as IMP. और बार चाहिए स्क्रीनशॉट 11. बेटा कोई ना कोई दे ही देगा. सो आप लोग प्लीज 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 शेयर योर स्क्रीनशॉट्स ऑन टेलीग्राम चैनल. तो वो जल्दी से जल्दी शेयर कर दीजिए ताकि बाकी बच्चे इसका फायदा उठाएं. And please finish your notebook. 1 or 2 students. Yes, but I will focus on your notebook. Don't worry, मैं वहाँ पे बता ही दूंगा. And I hope बहुत मजा आया आज का सेशन में. I thought कि you understood what is the difference between the capital expenditure and revenue expenditure and what is concepts and convention. This is all from my side. Thank you. Take care. Bye bye. And do study. We will meet on the Friday. So till that, beta. Bye bye. Jai Hind. Bye.